Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A very good afternoon to my viewers. In my previous sessions, I introduced myself and I introduced my subject and I also introduced the chapters. I told you there are total 39 chapters in social science subject. And as I promised, today I will be starting with my first session of syllabus, the first chapter, Advent of Europeans to India. Now, what do you mean by the word Advent? We can say the word Advent refers to adventures. You know very well, European countries tried to invade India, tried to loot India, because once upon a time, India was a very, very rich country. Seeing the richness of India, European countries planned to attack and capture and loot India. So the word Advent refers to the events, the adventures of European countries in India. When Europeans arrived in India, what did Europeans do in India? How did Europeans try to enter India? How did Europeans try to capture India? In this chapter, we will be dealing with the French and the English. Of course, many European countries tried to enter India and capture India. But our focus will be more on the stories of French and the stories of English in India. Coming to the introduction part of this chapter, you know very well that Europe and Asia, I am speaking of two important continents. Europe and Asia had very, very good trade relationship and business relationship. You can say business relationship. You can also say commerce relationship. The word commerce generally means trade, business, style of doing trade, style of doing business. तो यूरोप एंड एशिया के बीच में बहुत ही जबरदस्त कॉमर्स रिलेशनशिप्स थे। एशिया में अगर बात की जाए इंडिया की, इफ वी स्पीक ऑफ द कंट्री इंडिया विच इज पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, रिलेशनशिप between European countries and India in terms of trade, in terms of business was very, very strong. The Indian rulers exported का मतलब है transporting goods from India to European countries. ठीक है, इंडिया से यूरोपियन कंट्रीज के लिए. So Indian rulers exported important products like cotton textile, silk textile, garments, pearl,
diamond, gold, sandalwood, rice, and very important spices. मिर्च मसाला, मिर्च मसाला जैसे पेपर, कार्डमम, क्लोव्स, जिंजर, cinnamon. These many Indian products were in great demand in European countries. उसी तरह से Indian rulers imported products. Import का मतलब है when goods from European countries came to India. So Indian rulers imported various things, various products like glass. I am speaking of mirror glass, mercury, coral. Coral are underwater plantations. Wine यानी शराब. Indian rulers also imported घोड़े, horses. Of course, there were Indian horses, but Indian rulers had the fantasy of riding foreign bred horses. So Indian rulers also imported horses. Today also we have Arabian horses in India. We have European horses in India. Sharab, wine is imported even today. तो import and export चलता था between India and European countries. अब जो तरीका था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने का तरीका, रास्ता, देयर वर ओनली टू वेज. Either it was waterways or it was landways. So I can say the two routes of import and export of trade between European countries and India was through land routes and water routes. Land routes and water routes. These were the only two routes of trade. यूरोप में बहुत सारे important cities थे which were considered as business cities. In other words, these European cities were also called as distribution centers. ठीक है? They were business cities also called as distribution centers. जैसे वेनिस, मिलान, जेनीवा, कॉन्स्टेंटिनोपल and Florence. These were few important business cities, powerful distribution centers in Europe. इनका काम था to import Indian products, okay, import Indian products and distribute it throughout Europe. Distribute it throughout Europe. So which names did I take? Venice, Milan, Geneva, Constantinople and Florence. इनमें
सबसे रिचेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वाज कॉन्स्टेंटिनोपल। Constantinople was the richest and the largest distribution center in Europe. इसीलिए कॉन्स्टेंटिनोपल को गेटवे ऑफ यूरोपियन ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल को गेटवे ऑफ यूरोपियन ट्रेड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल यूरोप का सबसे रिचेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था। बट अनफॉर्चुनेटली, आई एम रिपीटिंग, अनफॉर्चुनेटली a very unfortunate incident happened। ठीक है, unfortunate incident happened in the year 1453 AD। In the year 1453 AD, AD का full form Anno Domini। Many say AD stands for after death. It is wrong. It stands for Anno Domini. AD is the period, the era after the birth of Jesus Christ। ठीक है, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद से जो जमाना चल रहा है, इस जमाने को, इस एरा को, इस पीरियड को एनो डोमिनी कहते हैं। तो 1453 AD में अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंड। Constantinople was attacked and invaded and captured by Ottoman Turks। ठीक है, ओटोमान टर्क्स। ओटोमान टर्क्स एक किंगडम का नाम है। ओटोमान टर्क्स दे अटैक्ड, इन्वेडेड एंड कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल in the year 1453 AD। Now you may think Constantinople shut down। आप सोचते होंगे ट्रेड बिजनेस कॉन्स्टेंटिनोपल में बंद हो गया। नो, बिजनेस वॉज रनिंग, ट्रेड वॉज रनिंग। Ottoman Turks introduced tax system in Constantinople and the tax rates were very very high। ठीक है, बिजनेस चालू था, ट्रेड चालू था, बट ओटोमान टर्क्स ने क्या किया? दे इंट्रोड्यूस्ड system in Constantinople and the tax rates were very 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 high। इसीलिए मजबूरन, okay, that is why many European countries decided,
let us not pass through Constantinople. Okay, many European countries decided, let us not pass through Constantinople. Let us avoid Constantinople, totally avoid Constantinople. Then what is the solution? The solution is find new sea routes and new land routes to Asia. ये एक solution था. Find out new sea routes and new land routes to Asia, or you can say to India. क्योंकि पुराने सी रूट्स, पुराने लैंड रूट्स, द ओल्ड सी रूट्स एंड द ओल्ड लैंड रूट्स पास्ड थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपल. ऑल राइट, पास्ड थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपल. तो अब कॉन्स्टेंटिनोपल को अवॉइड करना है, तो इसका मतलब हुआ ओल्ड सी रूट्स एंड ओल्ड लैंड रूट्स को भी अवॉइड करना है. तो इसका मतलब हुआ नाउ इट इज टाइम टू डिस्कवर, टू फाइंड न्यू सी रूट्स एंड न्यू लैंड रूट्स टू इंडिया. To discover or find new sea routes or new land routes to India. वैसे भी ये जो पुराने सी रूट्स हैं वर कंट्रोल्ड बाय अरब्स एंड ओल्ड लैंड रूट्स वर कंट्रोल्ड बाय इटालियंस. याद रखिए, old sea routes were controlled by Arabs and old land routes were controlled by Italians. ये भी एक प्रॉब्लम है. तो Arabs had total monopoly, total power over old sea routes, and Italians had total monopoly, total power over old land routes. So because of multiple unfortunate incidents, it was now time to discover, time to find out new sea routes and new land routes to Asia, especially India. अब इतना आसान नहीं है नया रास्ता ढूंढने के लिए, ठीक है, चाहे वो लैंड रूट हो या सी रूट हो. इट इज नॉट इजी टू डिस्कवर. यू नीड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत थी टू डिस्कवर न्यू सी रूट्स एंड न्यू लैंड रूट्स टू इंडिया. Which were the scientific instruments invented? Invent हुए थे. They were mariner's compass. सबको मालूम है कॉम्पस का काम क्या है? टू शो डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो मैरिनर्स कॉम्पस वॉज इन्वेंटेड. Gunpowder was invented. Yes, gunpowder से पहले there were only swords and knives. जब गन पाउडर इन्वेंट हुआ उसके साथ साथ गन भी इन्वेंट हुआ एंड कैनन भी इन्वेंट हुआ. सो गन पाउडर वॉज इन्वेंटेड ऑफ कोर्स फॉर प्रोटेक्शन पर्पस. गन पाउडर के साथ साथ गन एंड कैनन.
navigational maps were drawn पूरी दुनिया का navigational system, navigational routes were drawn. So indirectly or directly, the navigational maps were upgraded time after time. जैसे जैसे न्यू सी रूट्स एंड न्यू लैंड रूट्स दुनिया भर में डिस्कवर होते गए, नेविगेशनल मैप्स भी अपग्रेड होते गए. लास्ट but very important, astrolabe was invented. ये बहुत ही important scientific invention है जिसका नाम है एस्ट्रोलेब. एस्ट्रोलेब का काम क्या है? इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस. Okay, it is a kind of distance measuring device. It measures the distance between Earth and Sun. It measures the distance between Earth and Moon. It measures the distance between Earth and heavenly bodies like stars and planets. तो ये था आपका इंट्रोडक्शन. होप यू हैव अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन. अगली क्लास में आई विल स्टार्ट विथ द रियल स्टोरी, हाउ यूरोपियंस एंटर्ड इंडिया एंड व्हाट डिड दे डू इन इंडिया. टिल देन, stay home, stay safe, and yes, don't forget to subscribe our Kaizen Academy channel. Please like this video and bell icon को press कीजिएगा for latest updates. Till then, Allah Hafiz.